1968 से पहले जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक ने जो टीवी सोल्ड किए थे वो सेफ लिमिट से 1 लाख गुना ज्यादा रेडिएशन स्प्रेड करते थे और वहीं से ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना स्टार्ट हुई कि ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। पर दिसंबर 25, 1969 के बाद फेडरल हेल्थ एक्सपर्ट ने एक लिमिट लगा दी कि 0.5 मिलीरोड सेंट पर हावर से ज्यादा एक्सरे एमिशन कोई भी टेलीविजन स्प्रेड नहीं कर सकता। इसलिए आप कोई भी टीवी, मोबाइल या फिर पीसी यूज करते हो वो इतना एक्सरे एमिशन स्प्रेड नहीं करते जो आपकी आंखों को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सके। बट डेफिनेटली इससे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा टीवी या फिर मोबाइल यूज करते हो तो आपको सर दर्द करने लगता है, क्योंकि जब आप टीवी और मोबाइल यूज करते हो तब आपकी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है और इससे आंखें ड्राई हो जाती है, पपल्स छोटे हो जाते हैं क्योंकि आंखों की मसल्स को एडजस्ट करना पड़ता है लेंस के हिसाब से। इन शॉर्ट, जब भी आप किसी पास की चीज को देखते हो तब आंखें कन्वर्ज हो जाती है। इट डजंट मैटर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या फिर इवन ड्राइंग कर रहे हो। और इसीलिए यही सब चीजें करते वक्त आपकी आंखों में तनाव होता है और सर दर्द करता है। जनरली आपकी आंखें कंफर्टेबल तब रहती है जब आपकी आंखें पैरेलल हो, और आंखें पैरेलल तब होती है जब किसी दूर की चीज को देख रहे होते हो। इसलिए मोबाइल, टीवी, बुक रीडिंग या फिर इवन ड्राइंग करते वक्त अगर आपकी आंखों में तनाव हो या फिर सर दर्द करे तो सिंपल सॉल्यूशन है इसके थोड़ी देर बाहर घूमने चले जाओ और आंखों को थोड़ा रेस्ट दे दो एंड यू। Most babies are born with short eyeballs, but as a baby grows, their eyeballs get longer. The lens and the retina get farther and farther apart. By the time the kid is about 6, their eyeballs are just the right length for the lens to be able to focus incoming light and form a crisp image right on the retina, rather than focusing well behind it. At that point, the brain sends a signal to the eyeballs, telling them to stop growing. But starting a few decades ago, many kids, like more than 90% of kids in some countries, these kids' eyeballs continue to lengthen well past that spot. As a result, instead of focusing light right onto the retina, the lenses in these kids' longer eyeballs focus light on a point in front of the retina. From there, the light spreads back out, causing them to see a fuzzy image rather than a crisp one. For years, most scientists thought this was happening because of screens. Or more specifically, because kids were spending most of their time looking at things only a short distance away. You see, our eyes focus most easily on stuff in the middle distance. In order to clearly see stuff far away, the muscles have to work to stretch the lens in order to bring those images back to the sweet spot on the retina. And in order to clearly see things close up, the muscles have to work to smush the lens to bring those images forward to the sweet spot on the retina. Scientists wondered whether kids' eyeballs were growing extra long to shift this entire range farther back, allowing them to see close-up stuff in focus without having to use their muscles, but leaving their eyes unable to focus on things far away at all, no matter how much they strained. But recently, we found that kids who spend a lot of time parked in front of a screen don't necessarily have longer eyeballs than those who don't. Instead, it seems that the likely culprit is the hormone that carries the stop-growing signal from the brain to the eyeballs, or really, a lack of this hormone. We still don't totally understand how the entire signaling process works, but we do know that our eyes need to be exposed to a certain level of light in order for the hormone to form in the first place. Kids today, who only spend about half as much time outside as their parents did, simply aren't getting the light their eyes need to create enough of that hormone and give the stop growing signal. As a result, their eyeballs keep lengthening past the sweet spot, creating an epidemic of blurry vision, the likes of which the world has never, seen. Luckily, there's an easy solution for future generations. Go outside to watch your YouTube videos.